Hi guys, what's up? Alright, so today I'm going to cover a topic which is 7 mistakes in CAT verbal ability preparation. Now to be very honest, these are not the only mistakes that you guys do. There are a lot of mistakes, that people do while they prepare for their verbal ability, predominantly for CAT as an exam. Now, this is my experience, or this is something that I've been seeing over a period of time. This is something people ask me on Facebook, WhatsApp, Telegram. They ask me this on the phone, and I kind of, came across these predominant 7 mistakes or perception or attitude or mentality which kind of helps you not to do well in your verbal ability as far as CAT is concerned. So if you're not going to do this mistake, or if you are doing these kind of mistakes, if you take care of this right now, I think you will be able to do very well as far as verbal ability is concerned. So this is just my experience, and this is just what I've heard from students over a period of time, over years of time. So yeah, so if you're somebody in this category, try to get out of this category as early as you can. So let's get started and see what those 7 mistakes are, guys. Alright, the first thing is listening to bullshit. Now, here I see a lot of students asking me, sir, that CAT is very tough. As far as the verbal ability is concerned, verbal is damn tough. There are inference based RCs, there are new patterns, the TikTok questions are out of the way. I'm a vernacular student, I will not be able to do it. My vocab is little bad, I don't know, I cannot read. My reading speed is very bad. It's as good as fucked, right? So guys, this is what you need to stop listening to people. When somebody tells you that, RC is more about inference based, there is a new pattern. There is no fucking new pattern. It's just been there. This exam is beautiful. It is a static exam. It doesn't throw a lot of surprises to you. So guys, you need to breathe, you need to check out a couple of papers. You need to focus on your mocks. This is not happening. This is just not there. You check CAT 2017 paper, okay? It's the actual paper. There is not even a single paragraph which you can say it's an inference based paragraph. As far as the lengthy paragraph is concerned, I don't know what kind of length you're talking about. 1,000 words? No way, that's not happening, guys. Because the RCs, if you look at CAT has moved to around about 350 to 500 word RCs, I think below this, to be very honest. So the more you want to listen to this kind of bullshit, the more you're going to get demotivated, the more you're going to get upset. And trust me, the more you're going to get away from verbal ability. And you'll try your way out to do very well as far as quants and logical reasoning and DI is concerned. But again, whatever you do, you're gonna have constraint because you cannot do every goddamn thing as far as verbal, as far as quants and LRDI is concerned. So you gotta stop listening to this bullshit because this is not the reality. Okay. Next, too much attempts. This is a bummer because lot of times इतना attempts होता है बच्चा लोगों का. They have no idea. Like I see people giving mocks, right? मुझे बच्चा क्या बोलते सर मैंने mocks दिया, कितना attempt किया भाई? 30 attempts on 34. Are you serious? Now, as far as the September month is concerned, no doubt if you're getting 99.99, okay, you go ahead, but you're attempting 30, and what's your score? 40 percentile? Are you kidding me? So what you guys need to do is, if you are somebody who is attempting too much and not getting results out of it, stop attempting too many questions. Okay, focus on questions which can give you 90% to 100% accuracies. It's not necessary that you have to attempt 28, 29, 30 questions. Yeah, to be 100% percentiler, you got to attempt 28, 29 questions. But guys, you also have to take care of your accuracy at the same time. Okay, just by attempting too many questions, you're not gonna turn the table around and you're not gonna get 99.99. So please stop attempting as many questions as you, rather many questions. Third, this might sound a little rude, but then sorry to say, desperate preparation. Yeah, this is my experience and this is what I've heard from people. What you guys do is that, as far as verbal is concerned, you expect easy results. Rather, you guys expect quick results. So you believe, you kind of believe that, okay, I'm gonna do one RC and I should get 4 questions correct on 6. That's too much. I have seen people solving RCs like crazy, like seriously crazy. I've been talking to this guy on Telegram, and I asked him how many. Like he was like, sir, I'm not actually able to get my accuracy around. I've been getting into 50 to 60% of accuracy, and can you help me? So I said, okay, bring it on. How many RCs have you done till date? He's like, sir, I'm solving 5 RCs a day. Are you serious? Is there anything wrong with this? No, there is nothing wrong with this. Okay, there's nothing wrong with this. This guy is like on an average 5 RCs, like he's solving around about 150 RCs a month. There's nothing wrong with this. It's good if you attempt this. It's good, but then if you're attempting so much, right? If you're practicing so much, right? Why your accuracy is 50 to 60%? So you got to break yourself. Put little break on your preparation. Something miserably wrong is happening with your preparation. If you're attempting these many RCs and if you're not getting incorrect, guys, it's time for you to do little analysis the way you are working.
Okay, you are working as far as quantity is concerned. Trust me, it's not mechanical thing, right? I always tell my students, it's not mechanical like quants. Okay, you got the formula, you got the shortcut. Now jump on the book, take the questions, start solving it. It doesn't work like that. It's a language, you need to understand. It's not verbal, it's a language. It takes some time. So whenever you guys are there, if you're desperate as far as your preparation is concerned, like अब भी करा, अब भी आना चाहिए, 2 आरसी किया, 3 आरसी में रिजल्ट नहीं आता है, 10 आरसी किया, 15 आरसी किया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, जितना आरसी करो 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 करते जाओ. मैंने कहा इट्स नॉट लाइक कॉन्ट कि अपना जितना करोगे, इट्स नॉट लाइक पजल, जितना करोगे उतना आपको समझ में आएगा. यार आप जितना ज्यादा करोगे और आपका एक्यूरेसी कम होगा, आपके क्वेश्चंस नहीं अच्छे से सॉल्व होंगे, ट्रस्ट मी, आप डीमोटिवेट होने ही वाले हो, बिकॉज यू आर अंडर सच अ काइंड ऑफ लाइक यू जस्ट वांट रिजल्ट्स क्वाइट अर्ली. ऐसा नहीं होगा. You need to give some times, right? In my workshop, which I've taken in Pune, I have told my guys 10 golden rules. These are the rules which have been helping them to do any goddamn RC in the world. Okay, so you need to come up with something like this. कि okay fine, कोई भी RC आ जाए, क्या rules हैं जो मैं अप्लाई करूंगा? Okay, क्या चीजें हैं जो मैं अप्लाई करूंगा और कैसे मैं अपना RC निकालूंगा? That's for sure. So you need to come up with your plan. You need to understand yourself कि भाई हमारी गलती कहाँ पे होती है. Inference based question कितनी बार बच्चों को बोला जाता है, Inference based questions मत करो, फिर भी बच्चे करते हैं. कितनी बार मैं बताता हूँ कि यार जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, जो एक्सट्रीम होगा, उसको मार्क मत करो, बच्चे फिर भी उसको मार्क करते हैं बिकॉज दे फील लाइक दैट. यार मेरे को लगता है 70% ऑफ द पेपर बच्चा खाली फीलिंग में ही दे देता है. बिकॉज क्यों मारा ये क्वेश्चन, क्यों ऑप्शन नहीं मारा, सर अच्छा लग रहा था, सर मतलब मुझे फील हुआ कि ये सही होगा. ऐसा नहीं होता. सो गाइज, you need to stop. You cannot work like that. So make sure that you are not working or you are not into the bracket of desperate preparation. Pause yourself, take some time, analyze yourself. एक आरसी करो दिन का, ढंग से करो, समझ के करो. You are on a right track. All right, let's go with the fourth one. Okay, vocab pressure. Cool. All right, now vocabulary. Okay, trust me, as far as CAT is concerned, this is not needed. Okay, this is absolutely not needed if you're not targeting 99 percentile plus. If you are targeting 99 percentile plus, yes, then it's absolutely needed. But understand this, you don't have to get so much, associated with vocabulary. You don't have to go so crazy over and above this vocabulary thing. Word power made easy, right? People have been like, like पूरा रट्टा मार दिया सर, वर्ड पावर मेड इजी को पूरा रट्टा मार दिया, फिर भी अभी तक ऐसा कोई दिखता ही नहीं है मुझे कि जो मतलब ऐसा कोई वर्ड है नहीं कि जो मैं कर सकता हूँ या ऑल दैट स्टफ. जो वर्ड पावर मेडिसी से करा वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा कैट में. यार कैट का आरसी इज नॉट वोकैबुलरी बेस्ड. गो बैक एंड चेक लास्ट 5 years के पेपर्स. कैट में वोकैब की जगह है नहीं. जब मैं वोकैब की बात करता हूँ, मैं 2 चीजों की बात कर रहा हूँ. एक होता है आपका आरसी ओरिएंटेड वोकैब और एक होता है आपका सिनोनिम और एंटोनिम टाइप का वोकैब. ये वाले क्वेश्चन तो आते ही नहीं है. ये बेसिकली नॉन कैट में आते हैं, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीईटी, सीमैट में आते हैं. तो यार इनके लिए आपको वोकैब करना जरूरी है. बट जहां तक आप वोकैब की बात करते हो, बच्चा मुझे सीधा बोल देता है कि सर मेरे को तो वर्बल आएगा नहीं क्योंकि मेरा वोकैब इतना वीक है, मुझे वर्ड्स आते नहीं है. ट्रस्ट मी, कैट का आरसी, कैट का वर्बल इज नॉट ऑल अबाउट वोकैबुलरी. You might get this as a surprise, but this is it, right? You don't have to learn all the words in the world, and trust me, it's not all about vocab. It is something different which I'll be covering in the next paragraph. Now let's understand your vocabulary. What word power made easy teaches you, right? It teaches you roots, right? It teaches you roots, and there's some categories like personality की category होगी, which is okay. Then you talk about phobia. यार कौन से फोबिया आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितनी बार फोबिया बेस्ड आरसी भी आते हैं क्या? मैंने तो अभी तक आई हैवंट सीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो ये आगे फिर वो ऑर्थोपेडिक टाइप हो गया, वो डॉक्टर वाला कैटेगरी हो गया. लाइक व्हाट द हेल, लाइक कौन सा आरसी इसके बेसिस पे आता है? इक्का दुक्का वर्ड आता होगा यार, पर इक्के दुक्के वर्ड के लिए पूरा वर्ड पावर मेडिसिन हम चाट लेंगे. This is a sure waste of time. So you need to understand, you cannot just take, okay, द हिंदू लेके बैठ गए वर्ड टू वर्ड. बंदा दिन भर मेहनत कर रहा है, दिन में 10 वर्ड कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया. नो, ये वर्ड्स आने वाले हैं, नहीं आने वाले तुझे पता भी नहीं. एंड हम रूट्स की बात करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट रूट्स, राइट? Lot of you guys don't know there is something called as exception to root, which is not even given on any of the YouTube channel, on any of the word power made easy stuff, right? Let me give an example of these roots, right? What happens with the roots? Now let's say there are a couple of words, okay? I'm going to plot a couple of words out here. Say amiable, okay? Amiable, amicable, amorous, okay? These are the words, okay? Now they come from a root which is called as ami and
AMOR, that's Amy and Amor, okay? इसका मतलब होता है something which is positive, something which is lovely, something which is good, anything which is positive, anything which is good is called as it, amiable, amicable, amorous, so on and so forth. So this is it, like any root which is like Amy, right? It's a root, Amor is a root. तो इस वर्ड से जो भी शब्द बनते हैं, जो भी वर्ड्स बनते हैं, उनका बाय डिफॉल्ट मीनिंग यही होने वाला है, एमिएबल, एमिकेबल, माय ब्रदर इज प्रीटी एमिकेबल, दिस पर्सन इज एमिएबल, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट, राइट? ठीक है, मान लिया ये आपका रूट है, ये वर्ड पार मेड इजी ने आपको पढ़ा दिया. Now what I'm going to do is I'm going to write one sentence out here, and the sentence is Mr. X is an Amish guy. Okay, Amish, this is the word Amish. Now root आपने पढ़ लिया, आपको लगा कि यार AMI से चालू होता है, AMI का रूट मतलब लवली, गुड एंड ऑल दैट स्टफ, तो आपने बोला ओके, इसका मतलब होता है मिस्टर एक्स जो है ही इज अ गुड गाय, ही इज अ लवेबल पर्सन. नो, दैट्स नॉट द केस. द केस इज एक्चुअली अमिश इज द उल्टा वर्ड. अमिश का मतलब होता है फॉल्टी, somebody who has done something wrong and somebody who's got a guilt about it. So whatever words you're going to do, they're not going to be sufficient, and it is not necessary that you should know all the words in the world, to be very honest, to stop wasting your time as far as vocabulary is concerned. आप vernacular वाले हो, आप हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, कॉन्वेंट वाले हो, कुछ भी मीडियम आपका, doesn't matter. जितना भी वर्ड्स आप कर सकते हो इतना इनसफिशिएंट है. हाँ, अगर आप बोलते हो कि सर मैं कैट नहीं करना चाहता, मुझे एनमैट देना है, मुझे स्नैप देना है, करो भाई, वर्ड्स करो, जरूरी है. फिर भी कितना वर्ड्स आएगा यार, कुल मिला के अगर मैं सब एग्जाम भी कर लूं, कितना वर्ड्स आएगा? 50 वर्ड्स आएगा. मान लो somebody is there जिसका वर्ड अच्छा नहीं है, बट यार जिसकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, बट वो बंदा अच्छे से आरसी कर पाता है, स्टिल पॉसिबल, ठीक है. बट हाँ, जहां तक एनमैट का सवाल है, जहां तक स्नैप का सवाल है, थोड़ा वोकैबुलरी होना जरूरी है. तो उसके लिए आप वर्ड पावर मेड इजी कर सकते हो, पर आपको इतनी भी चीजें करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने ये जो वर्ड्स बोले, अगर आप उतना भी कर लोगे तो भी चलेगा. गायनेकोलॉजिस्ट कर लिया, फोबिया कर लिया. स्टॉप डूइंग ऑल दिस बुलशिट, स्टॉप डूइंग ऑल दिस शिट. ये 5 साल पहले होता था, 6 साल पहले होता था. नाउ नथिंग हैपेंस लाइक दैट. इक्का दुक्का वर्ड है तो उसके लिए इतना मत बुरा मानो यार, बाकी इतना सारा पड़ा है, वो तो एटलीस्ट कर लो. Fine, and that's what brings me to this point, to be very honest. Now, it's not always about vocabulary, it's always about vocab versus English usage, right? जहां तक मैंने RC की बात करी, if you remember, मैंने बोला था 2 टाइप के vocab होते हैं यहाँ पे. एक होता है RC वाला, एक होता है vocab वाला. vocab वाला मतलब synonym and antonym. RC वाला मतलब जो RC के बीच में जो आपको वर्ड्स आते हैं, जो सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं. नाउ दोज वर्ड्स आर नॉट बेस्ड ऑन vocab, those words are actually based on English usage. Now let me give an example out here. There is a word called as amorous. Now amorous जो word होता है, वो अच्छा word भी होता है, वो बुरा word भी होता है, right? So there is something called as amorous. Now let me write a sentence out here for you guys. Let me explain this to you in detail. Okay, so let's take this word amorous. Okay, now amorous का मतलब होता है something which is good, like something which is lovable, something that sort, right? This is basically referred to a person. Now अगर मैं question बोलता हूँ, okay, I'd say Mr. X, or say Mr. X is an amorous relationship with Miss Y. Okay, यहाँ पे this amorous is basically considered as a good feeling, like good feeling about a person, right? But मान लो अगर आपका paragraph talks about something which is wrong, something which is not good, something कुछ सोसाइटी वाला पैराग्राफ हो गया, समथिंग इज हैपनिंग, एंड अगर आप ऐसा बोला जाता है दैट मिस्टर एक्स इन एन अमोरस रिलेशनशिप विद मिसेस वाई, यहाँ पे ये जो अमोरस है इज नॉट अ गुड अमोरस. दिस अमोरस इज अ बैड वर्ड. इट टॉक्स अबाउट हैविंग इंटेंस लव, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट. आई होप यू गाइस आर स्मार्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन डिकोड दिस. मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो वर्ड होता है, जो वर्ड आपके आरसीव में आता है, उसका वोकैबुलरी मीनिंग यहाँ पे मायने नहीं रखता. उसका मीनिंग कब मायने रखता है कि ऑथर बोलना क्या चाहता है, what he wants to convey. And that's the reason most of the time CAT, ZAT and MAT, all the exams, जब मैं RC के वर्ड्स की बात करूं, these are mostly English usage driven and not vocab driven. Let's take a word, something called as ambrosia. Okay, ambrosia, it's a beautiful word. It's basically a mythological word. Okay, ambrosia का मतलब होता है हिंदी में अमृत, भगवान का खाना, समथिंग लाइक दैट. तो मान लो अगर हमने कहा कि ओके दिस इज एन अम्ब्रोसिया, हैव इट, इसका मतलब ये होता है कि ठीक है अमृत है, पी लो. बट अगर कोई बोलता है व्हाट, पनीर इज एन अम्ब्रोसिया फॉर मी, और चिकन प्लेट इज एन अम्ब्रोसिया फॉर मी, इट डजंट मीन दैट वो उसके लिए अमृत के बराबर है, राइट? यू कैनॉट कंपेयर दीज टू थिंग्स टुगेदर. उसका कहना ये है कि यार ये खाने से मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि मैंने अमृत पी लिया. Are you guys with me? So यहाँ पे इंग्लिश यूसेज की बात होती है, यहाँ पे वोकैब की बात नहीं होती है, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड का मीनिंग नहीं लिया जाता. एंड दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग, एंड दैट इज वेयर यू गाइज गो रॉन्ग व्हेन यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस लाइक मेन आइडिया,
tone of the author, inference based questions, according to the author, according to the paragraph. यहाँ पे ये सब questions गलत हो जाते हैं because हम word to word इसका meaning लेते हैं. So guys, this is something you don't have to do, right? So understand, you don't have to do this kind of things. तो जब आप बात करते हैं अपने वोकैबुलरी की, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट वोकैब, इंग्लिश यूसेज, और मान लो यार आप आइंस्टाइन नहीं हो, आपको पूरी की पूरी इंग्लिश की वर्ड्स नहीं आती है, बट एटलीस्ट इतने तो स्मार्ट हो कि एक आध वर्ड अगर यहाँ पे होता है, ये 3 लाइनें पढ़ के समझ में तो आएगा कि ऑथर की फीलिंग्स क्या है, ऑथर बोलना क्या चाहता है, इतना तो समझ में आएगा कि यार ये पॉजिटिव वर्ड है कि ये नेगेटिव है, इतना भी समझ लिया तो भी काफी है. तो वोकैब करना आज से छोड़ दो, इतना टाइम बर्बाद मत करो. वर्ड आर मेड इजी, इट्स ओके, बट दैट्स नॉट गोना मेक योर लाइफ इजी. एंड अगर आपको 2-3 क्वेश्चन करने सिनोनिम एंटोनिम के और आपको लगता है कि आपका कट ऑफ क्रैक हो जाएगा, then I cannot help you. But it's just that I am telling you that rather than going behind the vocab, it's better to solve some good RC, some quality RC, and do some analysis, and it'll give you good marks. That's it. Next. All right, not practicing or practicing without direction. I see a lot of people, they are practicing every day. They have no idea. They're taking economics ka paragraph, they're taking science ka paragraph. In the end, what's happening? They are not getting results at all. Okay, so कितने चीजें आती है? ये इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, माइथोलॉजी हो गया, ठीक है, ह्यूमैनिटीज हो गया, फिर आपके बाद जैसे वो कुछ इवोल्यूशन होता है इकोनॉमिक्स का, वो हो गया, अमेरिकन इकोनॉमी हो गया, चाइनीज इकोनॉमी. यार यू टेल मी हाउ मेनी थिंग्स आर देयर. यू हैव 6 months फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, आप कितना करोगे यार? मतलब क्या आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप सोशल साइंस पढ़ोगे, आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, आप माइथोलॉजी पढ़ोगे, सिर्फ आरसी क्रैक करने के लिए आप इतना कुछ करोगे, राइट? तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ना चालू कर देते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैट. तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स के हमें वर्ड नहीं आते हैं, थोड़ा सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा. डोंट डू ऑल दिस थिंग्स. दिस इज कॉल्ड एज डोंकी वर्क. दिस इज नॉट गोना मेक यू स्मार्ट. इसलिए मैंने बोला था कि you need to come up with certain rules, you need to practice or you need to start reading. अगर कितना रीड करोगे, इतना रीडिंग, हाँ रीडिंग की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. वो कैसे होना चाहिए? should be voracious reader, you should be reading from from last 3 years or 4 years. वो दिल से आना चाहिए. Just because you are preparing for MBA doesn't mean that you start reading it. So guys, you need to come up with some rules. Like you can watch my videos जहाँ पे मैंने ये rules mention करे हैं. Try utilizing those rules, try applying those rules on the RCs and life will be sorted. So when you practice, do not practice without direction, okay? Decide what you want to do. Are you going to be focusing on RC or are you going to be focusing on verbal ability? What's your strength? Para jumble, para completion, odd one out. What's your focus? Is it economics? Is it fact-based questions? Do not touch inference-based question. You need to be ready with your game plan. If you are not ready with your game plan, your plan to get failed for sure in this case. Okay, so if you're not practicing or if you're practicing without a direction, then your efforts are useless. So you just take 2 RCs a day. Like take 2 RC, practice, thoroughly do the analysis. कहाँ गलती किया, क्यों गलती किया, ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ. बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, जब बच्चे ट्राई करते हैं सॉल्व करना, जब रीड करते हैं आरसी, कोई भी आरसी लेते हैं, सबसे ज्यादा फोकस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. बस कुछ भी हो जाए भाई, मुझे आंसर लेके आना है. दे आर सो डेस्परेट टू गेट आंसर्स करेक्ट. डोंट डू दैट. जस्ट कीप द आरसी फ्रंट ऑफ यू. ट्राई टू रीड द आरसी. अंडरस्टैंड कि कितना आरसी आपको आता है. दिस इज व्हाट आई हैव डन इन माय क्लासरूम इन पुणे. मैंने बच्चों को बोला एक आरसी लो, उसके ऊपर जो 10 रूल्स है वो अप्लाई करो, उनको अंडरलाइन करो और देखो आपने जो भी चीजें अंडरलाइन करी है क्या वो क्वेश्चंस में आया है, क्या वो ऑप्शंस में है, क्या वो आंसर्स में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू डू योर ग्राउंड वर्क वेरी वेल. जैसे आप क्वांट्स में करते हो, पहले फॉर्मूला समझ लिया, कंसेप्ट समझ ली, सॉल्व एग्जांपल समझ लिया, बाद में क्वेश्चंस पे चले गए और सॉल्व करना चालू किया. सो प्लीज डू दिस थिंग्स, एटलीस्ट गेट योर ग्राउंड वर्क डन very well. Excessive fear. This is the most important point of all the 7 points. Excessive fear. I have no idea. I don't know why you guys are so freaked about verbal is concerned. आप इतना फोबिया वर्बल का है, पता नहीं क्यों. मे बी बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करते हो या फिर आपको बोला होगा किसी ने कि वर्बल टफ है. ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, इफ यू प्रैक्टिस इन अ नाइस वे, वर्बल इज रियली इजी. इट कैन गिव यू मोर स्कोर देन एनी अदर सेक्शन इन कैट और फॉर दैट मैटर इन एनी एग्जाम. एंड वर्बल एक ऐसा चीज है, अगर आपको वर्बल एबिलिटी आता है, आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बढ़ जाता है. कौन सा लेवल है आप मैनेज कर लोगे. पर यहाँ पे आई विल गिव यू वन क्विक एग्जांपल व्हाट गोज रॉन्ग एक्चुअली हियर. Okay, so what goes wrong is basically we are lacking practice out here, okay? And when I say we are lacking practice, I'm saying that we lack quality practice. Now, I was talking to one of the students the other day.
and I explained to her is that, okay, now she says that, sir, I'm comfortable with DI, you know, I'm comfortable with logical reasoning and all that stuff, but I have a phobia as far as verbal is concerned. Now, जब मैं DI की बात करता हूँ, ठीक है, what is DI? DI is right front of your eyes. आपने visualize कर लिया है, क्या आएगा? Line chart आएगा, ठीक है, ये bar graph आएगा, pie chart आएगा, something that sort. So the moment you look at DI, this is what DI for you. ये आपके लिए DI है. आप DI को ऐसे ही जानते हो, quants को आप ऐसे ही जानते हो कि it's all about numbers, right? But this is what you know, right? तो अगर आप ऐसे DI देखोगे तो डेफिनेटली आप आगे चलोगे, आप सॉल्व करोगे, थोड़ा हाथ पैर मारोगे, कोशिश करोगे, ठीक है चलो नंबर क्रंचिंग है, कर लेते हैं, बिकॉज you are habituated to solve this kind of DI. That's the reason आपको यहाँ पे डर नहीं लगता. बट मान लो अगर आपको DI केसलेट के फॉर्म में आ गया तो, राइट, 80% जनता इसको अटेम्प्ट करती ही नहीं है. यहाँ पे आपको पता नहीं क्वेश्चन क्या आने वाला है, बट यू आर फेमिलियर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इसलिए आप इसके लिए जाते हो, आप ये करते हो. बट केसलेट वाला DI आ गया तो you don't do it. In a same way, what happens, there is nothing defined in RC. It's just a language. You can only see paragraphs, those ugly paragraphs, and that's the reason you are excessive scared about it. So stop worrying about these things. Start working on RC. Take at least one RC on a daily basis. So don't do all these things, right? इतना अगर डरोगे RC से, RC कभी नहीं होगा. So guys, these are 7 mistakes that people are doing mota moti. So if you are in one of this category, please stop. Don't do it, right? So yeah, don't listen to a lot of rumors. Don't listen to a lot of myths. Don't try to attempt too much. Don't be desperate about your preparation. Get away from vocabulary. Try to get the idea about English usage. Practice, but with direction. And please don't be scared of RC. Don't be scared of verbal. It's beautiful. If you love it, you'll enjoy it, and that's how your score will go up. तुम्हें enjoy करना है, नहीं करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, but at least तुम्हें पता है कि यार अगर ये एक सेक्शन मेरा सही नहीं हुआ तो मेरी कॉलेजेस निकलनी इम्पॉसिबल हो जाएगी. बच्चे 95 लाते हैं LRDI में, बच्चे 95 लाते हैं क्वांट्स में, वर्बल में लाते हैं 60. एग्रीगेट की पूरी बैंड बच जाती है. सो प्लीज कीप these things in mind and try not to do these mistakes. If you are in trouble, if you have a problem, you can always reach out to me on this. This is my FB page. This is my number. You can WhatsApp me, you can Telegram me, or you can put a comment on this video, and do subscribe to my channel because I'm going to be putting across a lot of videos as far as verbal ability is concerned, and I will be actually solving couple of RCs from CAT and from my handouts, and I'm going to show you how to apply those rules and how to work out with your RC. So guys, I hope these things help you. Do give it a shot, and thank you so much for your time, guys. I wish you good luck. Thank you so much.